Hi guys, welcome in second lecture of alternative current, chapter number 10 of 12th class. Now we study about average AC voltage. In previous lecture we study about average AC current. Only name voltage is changed at the place of current. Okay, and symbol is also changed, and remains part will be same as it is as in average current. Okay, now we discuss about definition of it. Definition is that the mean value of voltage in complete time period is known as average voltage. ओके, एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल वोल्टेज इन कंप्लीट टाइम पीरियड अपॉन कंप्लीट टाइम पीरियड. ओके, वोल्टेज जो है वो इन dt टाइम, स्मॉल dt टाइम में वोल्टेज कितनी होगी? v dt. बट इन कंप्लीट टाइम में क्या होगी? अपन इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t अपॉन में कंप्लीट टाइम पीरियड को अपन शो करते हैं कैपिटल T से. ओके, नाउ वी कैन राइट दिस एज I average is equals to 1 upon T integration 0 to T v dt. We put the value of v is equals to Vm sin omega t. Derivation of it is same as average current, only symbol is changed. Current is I but voltage is V. Okay, only symbol change. Then I average means V average average voltage है, then we use symbol V. Okay, so V average is equals to 1 upon T integration 0 to T. At the place of V put Vm sin omega t and dt. Integration is with the respect to t, then Vm come out, then V average is equals to Vm upon t integration 0 to t sin omega t dt. Integration of sin omega t will equals to Vm upon t तो है, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? माइनस कोस ओमेगा टी. साइन का माइनस कोस एंड टी के मल्टीप्लाई में ओमेगा है तो ओमेगा किस में आएगा? डिवाइडेशन में. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी. वी पुट द वैल्यू 0 टू टी. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन at the place of small t. Then V average is equals to Vm upon t माइनस कोस ओमेगा टी. स्मॉल टी के प्लेस पर आप कैपिटल टी रखेंगे तो माइनस कोस ओमेगा कैपिटल टी अपॉन ओमेगा. माइनस लगा के अब आपको इस स्मॉल टी की जगह लोअर लिमिट रखनी है, तो लोअर लिमिट है 0. स्मॉल टी के प्लेस पर आप 0 पुटअप करोगे तो माइनस है, ये खुद माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस कोस ओमेगा इंटू 0, कोस ओमेगा इंटू 0 अपॉन ओमेगा 0 टू टी. ओके, सॉरी लिमिट तो हमने पुट कर दी इसमें, तो ये इतना ही रहेगा. नाउ वी नो दैट omega is equals to 2 pi by t. Then omega t will equals to 2 pi. Okay, so we put the value of omega t 2 pi here. Then V average is equals to Vm upon t माइनस कोस ओमेगा टी. ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई, देन इट बिकम्स
माइनस cos 2 पाई अपॉन ओमेगा, माइनस माइनस प्लस जो यहाँ हो गया था, cos ओमेगा इंटू 0 will equals to cos 0 upon omega. Okay, now we put the value of cos 0 and cos 2 pi. We know that cos 0 is equals to 1 and cos pi 2 pi also equals to 1. Okay, now we put the both value, then V average is equals to Vm upon T माइनस cos 2 पाई के प्लेस पे 1 आएगा अपॉन ओमेगा प्लस cos 0 की वैल्यू भी 1 अपॉन ओमेगा. नाउ वी टेक ओमेगा कॉमन, ओमेगा, देन Vm अपॉन T तो है ही, ये हो जाएगा ओमेगा T माइनस 1 प्लस 1. ओके, minus 1 plus 1 remains, minus 1 plus 1 is equals to 0, then V average is equals to Vm upon omega t into 0. Now we multiply with 0, then it totally becomes 0, then V average is equals to 0. It is the value of average voltage or average AC voltage. Okay, so value of average AC voltage in complete time period will be 0. ओके, एवरेज करंट भी 0 था, एवरेज वोल्टेज भी 0 होगा इन कंप्लीट टाइम पीरियड. ओके, हाफ टाइम पीरियड में अलग वैल्यू मिलेगी. तो नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट टू प्रिपेयर योर नोट्स. आफ्टर इट वी स्टडी अबाउट एवरेज एसी करंट इन हाफ टाइम पीरियड. ओके, now we study about average current in half time period. In previous lecture we study average current in complete time period, but now we study about half time period. Only change time period value. Okay, in previous lecture for full complete time period we use capital T, but for half time period we use T by 2. Okay, only value T change in T by 2, and in theory the value complete time period is changed as half time period. Okay, so definition is becomes the mean value of current, mean value of AC current in half time period. Okay, in previous lecture we study in for a full time period or complete time period. At the place of complete time period we write half time period. Okay, so average value in half time period is the mean value of AC current in half time period is known as average AC current for half time period. Okay, and formula is I average is equals to total current in half time period. In previous lecture here is full time period और here भी full time period था, यहाँ है half time period. Okay, only this is change, half time period. Okay, now formula becomes I average is equals to current in dt time will equals to I dt, but in half time period we integrate it 0 to capital T by 2.
Okay, limit will be 0 to capital T by 2 for half time period upon half time period, so T by 2. Okay, only this is change. In previous lecture here is capital T, but now is T by 2 for half time period, and here also is T by 2. Now we can write it I average is equals to 1 upon T by 2 limit 0 to T by 2 I dt, and 2 comes in upward side, then I average is equals to 2 upon T limit 0 to T by 2 I dt. We know that I is equals to Im sin omega t. So I average is equals to 2 upon T 0 to T by 2. Value of I is equals to Im sin omega t dt. Okay. Integration is with respect to t, then Im comes out. I average is equals to 2Im upon t limit 0 to T by 2 sin omega t dt. Okay. Now we integrate sin omega t, then integration of sin omega t m upon t. Integration of sin omega t we study in 2 times in this lecture, that minus cos omega t upon omega. We study this integration 2 times in previous topic in this chapter. Okay, 0 to T by 2. Now we put the value of limit in this, then I average is equals to 2Im by t. We put upper limit at the place of small t, then it becomes minus cos omega t by 2 upon omega, minus cos omega t by 2 upon omega, minus, now we put value, now we put lower limit at the place of small t, then minus cos ओमेगा t की जगह 0 रखेंगे तो ओमेगा इंटू 0 अपॉन ओमेगा, देन माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, एंड कोस ओमेगा t की जगह 0 रखेंगे तो कोस ओमेगा इंटू 0, कोस ओमेगा इंटू 0 अपॉन ओमेगा. ओके, we know that t omega is equals to 2 pi by t, and omega t is equals to 2 pi. Put the value of omega t, then I average is equals to 2Im upon t minus cos 2 pi. At the place of omega t we put the value of omega t 2 pi upon 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में ओमेगा प्लस कोस ओमेगा इंटू 0 0 अपॉन ओमेगा. ओके, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2Im अपॉन t, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बनेगा, इट बिकम्स माइनस कोस पाई अपॉन ओमेगा प्लस कोस 0 अपॉन omega. Okay, now we put the value of cos 0 is equals to 1 and cos pi is equals to minus 1. Okay, then I average is equals to 2Im by t
माइनस कोस पाई के प्लेस में -1 अपॉन ओमेगा प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा. माइनस माइनस बिकम्स प्लस, देन आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2im अपॉन ओमेगा कॉमन लेंगे, टी पहले से है तो ओमेगा टी, माइनस माइनस +1 और +1. ओके, it becomes 2. Then I average, here we put the value of omega t is equals to 2 pi. here देखो omega t is equals to 2 pi, यहाँ 2 pi रखेंगे. Then I average is equals to 2im upon, at the place of omega t becomes 2 pi, then 2im upon 2 pi, 2im upon 2 pi into 2, then 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2im अपॉन पाई, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा. अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 अपॉन वैल्यू ऑफ 5 3.14 into im. When we divide it, then it becomes 0.636 into im. Okay, this is the value of average, this is the value of average current in half time period. Average value of current in full time period or complete time period is 0, but average value of current in half time period is 0.636 I maximum. Here I maximum is the peak value of current. Okay, that's all. Now you can take a screenshot to prepare your notes. Thank you.